तू एक पढ़ने के लायक नहीं है। लायक नहीं है, किसी का लायक नहीं है। तो भी होने का लायक नहीं है, इंडियन सिटीजन होने का लायक नहीं है। Coronavirus challenge. नाम दसो कर्फ्यू लग गया बिल्कुल लौट दियो करे लो और सरकार भी मैडम ने डंडा मारूंगा 4 बार चलो तो बिल्कुल नहीं लोग बिल्कुल मैडम ने डंडे मारूंगा बंदा मैडम 5-7 आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरा तबीयत खराब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे साथ बात किया था, तेरे के साथ बात किया था, तेरे साथ बात किया था। मैंने ड्राइवर के साथ बात कर रहा था। ड्राइवर के साथ क्या कर रही है? उंगली दिखाया। तेरे के साथ बात किया था मैंने। नहीं किया था। तुम तू मेरे को धक्का लग के नहीं किया। तुम गाड़ी में बैठो। नहीं किया तू मेरे को। नहीं मैं तो सर क्लियर है। अभी अगर कुछ हो जाएगा तू देखेगा मुझे। मेरा घर में कोई नहीं है, को कौन लेके आएगा? मेरा घर में कोई नहीं है, मेरी आपने यहाँ पे इमरजेंसी चल रहा है, निकालेगी। मतलब अगर मेडिसिन नहीं, मैं क्या मर जाऊँ घर पे बैठ के? घर पे बैठ के तू चुप कर, साला बोल रहा है लड़की लोग को। हमको क्या बोला था? तू एक पढ़ने के लायक नहीं है। लायक नहीं है, किसी का लायक नहीं है। सिटीजन होने का लायक नहीं है, इंडियन सिटीजन होने का लायक नहीं है। तू चुप कर, तू बात करिए, तुम हम लोग के लिए कुछ ही कर रहे हो। ठीक है, जोल আছে बाबू, जोल का एविडेंस है। नहीं जोलটা দিতে जोल नंबर प्लेट डबल है साहब। ना डबल, हाँ डबल सारा चिपकी हुई है, ऑथराइज वाली है। ये खुला क्या लग रही है? देखो इसमें जंग लग रहा है। इसमें तो कभी दूध आया ही है। दूध पहले जा रहा है। एक्चुअली एक डाला एक काटू रख लो इसे, इसमें गाड़ी में रखो, कैन दीवार पे रखो। Coronavirus challenge. Normal flu, if I get that, I'm going to infect, on average, about 1.3, 1.4 people, okay, if there was such a division. Yeah. And if those 1.3, 1.4 people gave it to the next lot, that's the second time it gets passed on. By the time that's happened 10 times, I've been responsible for about 14 cases of flu. This coronavirus is very, very infectious, so every person passes it to 3. Now, that doesn't sound like much of a difference, but if each of those 3 passes it to 3, and that happens at 10 layers, I have been responsible for infecting 59,000 people. Now, I actually wasn't on top of that maths when you were doing that. Okay, that did come as a shock, yeah. Right. Now, most people are going to feel a bit pokey, or not very pokey, and be just fine, but they will have spread it around. And a few will get sick at about day 10 of their illness. So they will need to come into a hospital. And when they're in a hospital, they will consume resources and time, and people will look after them quite rightly. And they will be monitored to see if they become really, really sick. Those people then come to an intensive care unit, and that's where, if you're critically ill, your life gets saved or not. And this is the issue. If we've got a limited resource, which we have, a limited number of ventilators, a limited number of doctors, a limited number of nurses, which is fine,
because we can't run ourselves with a huge excess capacity all the time. If we overwhelm that, we can't provide that service of caring for these people properly. This isn't the end of the world, is it? No, we've got to remember that this is, I'm not going to play it down. It's going to be ugly, it's going to be horrible for a large number of people, but it will be a small number of people who get properly sick, and a smaller percentage of those again that need to come to an intensive care unit, and we can save the lives of a large number of those people too. But please just remember that the best chance we can give for the people who do fall ill is if we've got enough beds and enough staff and enough kit to be able to be there for you. And if you are irresponsible enough to think that you don't mind if you get the flu, remember it's not about you, it's about everybody else.